Santa Cruz West. Then I go to Holy Family Hospital and Vans Hospital, which is located into Irla, which is Ville Parle West. And we have IVF center also, so where we practice the test tube baby and fertility patients. We treat them. It's same at the Irla, which is Ville Parle West, opposite to the Cooper Hospital. Majority my practice is related to the high risk pregnancy and the preterm deliveries and premature babies, which is mostly we do it in the Surya Hospital. I'm practicing there since last 7-8 years, and my work experience is almost now more than 12 years. So that's about me. I had done my my graduation from the Government Medical College Meerut, and then I did my post graduation from say GS Medical College and the KEM Hospital, which is located in the Mumbai. And after that, I started my practice in 2014, and almost more than that now we have good experience with these things. Majority of our work was related to the high risk pregnancy and fertility point of view. So thank you, Baby Chakra, for giving me this such a beautiful opportunity to talk about this beautiful topic, conception after miscarriage. We'll start about it. Obviously, the conception is important nowadays for everyone, considering our lifestyles, our jobs, our career opportunities, everything related to that. The conception, which was previously was used to happen between the 20-25 years of the life of female. Now it has gone beyond little about 30 years of age. Most of the people are going behind the careers, and after that they decide about the marriage, and then the conception comes. So what about the conception after miscarriage? So conception after miscarriage, yes, obviously those miscarriages are a trauma. They are mental trauma to the patient, they're mental trauma to the husband, they're mental trauma to the family. And we have to think about it, that how you are going to get pregnant again. You always keep thinking, patients keep worrying about this, that how they are going to get the conception again. So we have those guidelines in place, considering the RCOG, that's Royal College of Obstetrics and Gynecology. Then there is something called as ISHRI. Then there are the American guidelines. But everybody will come to the one point that yes, conception can happen after a miscarriage. So not to worry about that. Definitely, if you have conceived naturally, it is going to happen again naturally. If you needed help, it can, again, the doctors can help you out, conceive with that part also, if you are taken the help of the artificial techniques. So conception can happen by all means for those who had a miscarriage. It is not always need to be worried that whether I will get a conception, मुझे pregnancy वापस होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है, all those things. So considering all this, yes, we have to think in a different ways. Like we have to sort out why the miscarriage happened. So miscarriages usually in most of the pregnancies in the first 3 months or first 1 month, 2 months time, they go unnoticed and the miscarriage happen on their own or because of the genetic causes or the chromosomal abnormalities. मतलब genetic abnormality के कारण most of the time miscarriages हो जाते हैं. Most of the pregnancies go unnoticed. See, we are human beings. The God has given us a chance by only 6% per month to become pregnant. Okay. So miscarriage, unknown miscarriages जो हो जाते हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है. But when it comes down कि yes, कुछ genetic कारण के वजह से हुआ है, genetic abnormality की वजह से हुआ है, yes, definitely we can investigate that thing. So first of all, even if you had only one miscarriage and after that you are trying for conception, not to worry. One miscarriage usually it's very common, so not to worry with that part. Considering the world over scenario, there are almost before 30 years of age, 10 to 15% patients undergo a miscarriage. After 30 years, the chances are a little higher. This probability is a little more. But after 40 years, the chances are almost 35 to 40% of miscarriage can happen. So what we can do about it? What we can do, when you come down to our clinic, when you come down to my clinic, we will just talk about this thing first, that why miscarriage happened. So we have to divide it into different parts. Either it's because of the genetic problem, either it is because of the anatomical problem like the uterine malfunction or uterine anomaly, whether it happened because of the infections, whether it happened because of the
some pathology in your body like the hypertension, thyroid disorders, or something like a blood disorders, which और क्लॉटिंग फैक्टर, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कोई क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी वगैरह है बॉडी में जिसको हमको रूल आउट करना है। अगर फर्स्ट मिसकैरेज होता है तो उसके बाद बहुत डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट टेक इट पॉजिटिवली कि आपके और आपके हस्बैंड के जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोनों नॉर्मल है। सो इफ यू कंसिडर दैट वे कि हम दोनों नॉर्मल है तो सेकंड शुड नॉट हैपन, बट स्टिल वी विल ट्राई एंड इन्वेस्टिगेट। यूजुअली आफ्टर 2 या 3 मिसकैरेज के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए जाते हैं, नॉट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मिसकैरेज। But yes, if you are above 30, if you are above 35, definitely we will do all the investigations whichever are required. So what are those investigations you require and how you have to sort out कि हम लोग कंसीव वापस कैसे करने वाले। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सोनोग्राफी, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अभी हमको एनाटॉमिकल पॉइंट से सोच रहे हैं, तो अगर आपका यूट्रस नॉर्मल है या नहीं है वो चेक करना है, तो उसके लिए आइदर वी कैन डू द 3D सोनोग्राफी और वी कैन डू द हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन से चेक किया जाता है यूट्रस नॉर्मल है या नहीं है करके। कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें यूट्रस में पर्दा होता है, उसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। सो अगर सेप्टम होता है और उसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं, सो वी हैव टू करेक्ट दैट थिंग कि वो सेप्टम को दूरबीन से जांच करके उसी के सहारे विद द सीजर और विद द इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग कॉटरी बोलते हैं जिसको, उसके साथ हम लोग उसको कट करके आपका यूट्रस वापस नॉर्मल कर सकते हैं। यूट्रस में दूसरा कोई प्रॉब्लम रहा तो उसको भी करेक्ट किया जाता है। सो वो रही यूट्रस वाली बात। अगर दूसरी चीज रहती है कि कभी कभी थैली का मुंह कमजोर होता है, मतलब उसको बोलते हैं सर्विक्स इज थैली का मुंह। अगर वो कमजोर रहा तो उसकी वजह से भी एबॉर्शंस होते हैं। एबॉर्शंस कैन भी पहले 3 महीने में होने वाले और दूसरे 3 महीने में होने वाले। जब थैली का मुंह कमजोर होता है तो मोस्ट ऑफ द एबॉर्शन जो होते हैं वो दूसरे हाफ में, मतलब सेकेंड हाफ में जो होते हैं, जबकि 4-5 महीने में होने वाले एबॉर्शंस उसमें वो थैली के मुंह के कमजोरी की वजह से होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूजुअली हम लोग अभी उसको, आपका एक बार सोनोग्राफी हो जाए, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, तो 4थे महीने के आसपास या 5वें महीने के आसपास थैली के मुंह पे टाका मारते हैं, उसको सर्वाइकल सर्कल आज बोलते हैं। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लुक फॉर दैट थिंग। ये रही यूट्रस वाली बात है। अगर आप फिर हम वापस चेक करेंगे कि यूट्रस में सब कुछ नॉर्मल आया, तो आप बोलोगे डॉक्टर अभी क्या करना है। सो वी कम डाउन टू द ब्लड पार्ट, मतलब आपके बॉडी में कोई ऐसा टेंडेंसी है जिससे क्लॉट बन रहा है, बॉडी में गुठली बन रही है, ब्लड में गुठली बन रही है और वो जाके वहां पे थैली के यहाँ पे अटक रही है, बेबी का ब्लड सप्लाई स्टॉप कर रही है, या फिर यूट्रस का मतलब थैली का ब्लड सप्लाई कम कर रही है। ऐसी वाली कोई बीमारी आप में है या नहीं वो हम चेक करेंगे। उसके लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी होता है। तो हम लोग उसको कोएगुलोपैथी बोलते हैं। कोएगुलोपैथी मतलब ब्लड क्लॉट होने वाली चीज। तो वो कोएगुलोपैथी की सभी जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जो ब्लड फैक्टर्स रहते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग टाइम हम लोग बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम रहता है, पीटीआईएनआर चीज है, देयर आर डिफरेंट सिंड्रोम्स। सो देयर आर डिफरेंट सिंड्रोम्स विच वी नीड टू टैकल। तो हम लोगों को वो सिंड्रोम्स भी टैकल करने होते हैं। तो वो सिंड्रोम्स का जो रहता है, जैसे एप्ला सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं। एंड वंस द ब्लड टेस्ट आर डन, देन अगर उसमें कोई चीज आती है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। द नेक्स्ट वन कम्स इज अबाउट द इन्फेक्शंस। देयर वर द ओल्ड टाइम जब हम लोग एक टॉर्च इन्फेक्शन करके बोलते थे, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा रहता था, रूबेला आता था, सीएमवी वायरस आता है, साइटोमेगल वायरस जिसको बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वायरसेस एंड डिफरेंट इन्फेक्शंस विच वी ट्राई एंड सी कि आप में ब्लड टेस्ट में होता है नहीं है। तो हम लोग उसके ब्लड टेस्ट करवाएंगे और जो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आपको उसके बारे में भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो ये 3-4 चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। किसी पेशेंट में थायराइड हाई होने की वजह से भी एबॉर्शंस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में या सेकंड हाफ में भी हो सकते हैं, जिसको प्रीटर्म डिलीवरी की जैसा भी हो सकता है, जो अगर आपका थायराइड लेवल बहुत ज्यादा है। तो कोई पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे हम लोग एसएलई बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, सो एसएलई करके चीज होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कोई पेशेंट्स में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन होता है, क्योंकि उनके इसमें कोई किडनी इश्यूज होता है, किसी को कार्डियक इश्यूज होता है, किसी को लिवर इश्यूज होता है। ऐसे वाले पेशेंट्स में जब कंसेप्शंस के इश्यूज बनते हैं तो हमको जो बेसिक पैथोलॉजी, मतलब आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसको पहले ट्रीटमेंट करके फिर वी हैव टू गो अहेड विद द प्रेगनेंसी एंड कंसेप्शन। सो कंसिडरिंग टुडेज एरा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हमको प्रेगनेंसी वापस होगा या नहीं। यस, देयर आर डिफरेंट वेज, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया
ये सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो उसको अनएक्सप्लेन बोला जाता है। उसके लिए भी आज के इसमें ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जैसे कि यूट्रस के बारे में हमने बोला था, कहीं कहीं पेशेंट्स में यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, तो फाइब्रॉइड की वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं, सो यू हैव टू रिमूव द फाइब्रॉइड। तो आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, यूट्रस वापस आपका नॉर्मल बनेगा, यू कैन गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। थैली की कमजोर थी, थैली के मुंह पे टाका मारा, उसका भी सॉर्ट आउट होता है। ब्लड टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम दिखा, उसका ट्रीटमेंट दिया, देन ऑल्सो इट विल बी सॉर्टेड। सो दीज आर द इजिएस्ट वे टू डू अबाउट दिस थिंग्स। सो एक मिसकैरेज हो जाए या 2 मिसकैरेज हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आप हमारे पास आ सकते हो और हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करके, उसके सभी ब्लड रिपोर्ट्स करके, जो रिक्वायर्ड सोनोग्राफी से वो करके, वी कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द ट्रीटमेंट फॉर यू। Thank you, Baby Chakra, and thank you, Naina. Can we start with the question answers? Okay, so somebody is asking about the question that she has lost a lot of weight after my last miscarriage and now BMI is lower than normal. What can I do to recover from it before planning a pregnancy? Okay, so आपको जो वेट लॉस हुआ है, वी हैव टू सॉर्ट दैट थिंग फर्स्ट कि आपका वेट लॉस क्यों हुआ। ओके, सो वेट लॉस क्यों हुआ उसका कारण ढूंढना जरूरी है। कभी कभी आपके इसमें कोई हार्मोन्स की बढ़ोतरी होती है, कोई हार्मोन्स आर ऑन द हायर साइड और कोई हार्मोन्स लोअर साइड पे जाते हैं। आपका फैट लॉस भी होता है, तो वो क्यों हुआ उसका बेसिक पैथोलॉजी जानना जरूरी है। वी नीड टू गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका वेट लॉस क्यों हुआ करके। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट और आपका डायबिटीज अगर अनकंट्रोल होगा तो आपका वेट लॉस बहुत फास्ट होता है। सो दैट इज वन रीजन। समटाइम्स कोई कोई पेशेंट्स में बॉडी टेंडेंसी होता है कि जिनका ऑलरेडी लोअर साइड पे है वेट, वो वेट लॉस उनका पोस्ट मिसकैरेज पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस हो जाता है। आपका बीएमआई चेक करना जरूरी होता है, उसके साथ साथ बीएमआर भी चेक करना जरूरी होता है। कोई पेशेंट्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उनको जो प्रॉब्लम्स होती है वी नीड टू सॉर्ट देम आउट। तो वो जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ बैठ के, मतलब हार्मोन्स के डॉक्टर के साथ बैठ के, अलॉन्ग विद द गायनेकोलॉजिस्ट, यू नीड टू गेट द ट्रीटमेंट फ्रॉम द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आल्सो। साथ साथ में वो ट्रीटमेंट होता है और उसके साथ फिर हम लोग आपको पर्टिकुलरली मेडिसिन और इफ यू रिक्वायर डाइट सजेशंस देके वी कैन रिकवर योर वेट। once you get a good weight gain is there, then only we can go ahead with the pregnancy. Okay, somebody is asking about it's been 7 years. I am not able to get pregnant, and I have got 3 months. I am 34 years old, and my weight is 69 kg. It's really losing my. You don't need to lose hope at all about all this. You can see us in our clinic. Last 7 years से pregnancy नहीं रहा है, and you have got pregnancy complete नहीं हो रहा है. Rather, you got 3 miscarriages. So yes, definitely we need to do the all workup about you. Your weight looks okay to me, but yes, definitely we will try and see कि आपका BMI क्या बन रहा है, क्योंकि you are 69 kgs, and considering that we need to check how your height and everything is, and बाकी सब जो इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि यूट्रस के बारे में, ब्लड्स के बारे में, इन्फेक्शंस के बारे में, वी नीड टू गेट दैट थिंग वर्क आउट, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड गिव द ट्रीटमेंट हाउ टू कंसीव अहेड. Okay, next question is somebody's experienced 2 recurrent miscarriages in which one was ectopic pregnancy. What extra care should I take? That's really unfortunate to have ectopic pregnancy. Yes, it can happen in anyone. It is usually around 5% of the patients the ectopic pregnancy can happen. 2 to 5% of the patient. It's a rare thing, but it's really unfortunate to have that thing. You don't need to take any extra care about that part. But yes, considering it, we'll consider it as a 2 miscarriages, and definitely we need to get the investigations done for you, and we need to start you on some medicines prior. And once your investigations are there, definitely we can add on a few extra medicines for you, where which will be helpful for you to conceive and continue the pregnancy and to have a good parenthood later on. Okay. What are the factors that I should take into consideration when planning a pregnancy after a miscarriage? I guess I have covered all those things in my initial talk of 5 to 7 minutes. Still, I will repeat that thing. Yes, so all of them, that factors you need to consider when you have miscarriage. Again, I will suggest that you should get your sonography or the hysteroscopy done to check for the uterus. Everything is good inside the uterus. Your blood reports, your infection tests, all should be done.
Some patients got some other disorders like diabetic hypertension and kidney disorders and thyroid disorders. So all needs to be taken care. If your all investigations are good enough, you don't need to worry about, and you can go ahead and start planning pregnancy once again. My last IVF pregnancy resulted into a miscarriage. When can I undergo an IVF again? Yes, so this is something different. Usually, once your IVF pregnancy fails, that afterwards you have to wait for 3 to 4 months to let go the effects of whatever the hormones you're taking. Usually, post IVF, we give a lot of progesterone and estrogens to continue the pregnancy. So those once you get your couple of periods after your failed IVF, you can speak to us or your whoever is your IVF consultant, and then you can go ahead with the pregnancy. So that's called as embryo transfer. You can go ahead again after that embryo transfer. But in between, if you have not undergone any checkup with your uterus, please go ahead and get a hysteroscopy done. Hysteroscopy will, that is just दूरबीन से हम लोग जांच करते हैं अंदर से यूट्रस की, वो आपने करना जरूरी है. If it is not done, in your case, if you are going for a IVF pregnancy or prior to the embryo transfer. Okay, so takeaway message for all of you is that you don't need to worry even if you have miscarriage. Definitely, considering the today's modern science, modern medicine, and we have evolved at such a level right now where we can definitely try and give the good results and a good pregnancy. Just that even if you are not around us, you are away and consulting somebody else, you can definitely try with all the things whatever I have mentioned, like checking the uterus, blood tests, infections tests, and basic pathologies and thyroid tests. All these tests really does matter. If you have not done them, please get all of them done. If you have issues with your uterus, you can get the hysteroscopy, that's दूरबीन से जो अंदर से जांच है वो करना जरूरी है. And if your आपका अगर थैली का मुंह कमजोर है तो definitely you can go ahead and get the cerclage done prior also. सी थैली के मुंह पे टाका सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं लिया जाता, प्रेगनेंसी से पहले भी लिया जा सकता है अगर आपका मिसकैरेजेस जो है वो चौथे या पांचवें महीने या छठवें महीने वाला हो रहा हो तो. So at least you will have the good hopes there. And considering all this, I will say that not to worry at all. Definitely everyone can get pregnant, and everyone can continue their pregnancy and have a happy parenthood later on. Okay. If any more questions, Naina, please do let me know. I am available at Surya Hospital daily between 5 to 7 p.m. That's my OPD timing. Every day I am available at Surya Hospital. So if anyone wants to come and do the consult, we can definitely help you out there. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Baby Chakra. Thank you. It was a nice opportunity given to me by Baby Chakra.